implementation. I just have one problem in the STL, like for the implementation that I'm just doing, but I think we'll be done in the next hour. And then I'm gonna start on the practice problems now today. ओके अच्छा वन मोर थिंग टेल मी कि तुम लोग को कुछ प्रेशर तो नहीं लग रहा है ना ज़्यादा मतलब ज़्यादा प्रेशर तो नहीं लग रहा है ना व्हेन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स Oh, no. No, not really. इट्स स्टिल मतलब डूएबल ना तुम लोग को ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि ज़्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हो गया No, ऐसा no, कुछ no. नहीं नहीं It's नहीं doable. देखो कभी भी ना मतलब व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यू शुड नॉट डू इट फोर्सफुली जब मन कर रहा है तभी करना है ठीक है Yeah, yeah. ज़बरदस्ती टाइप का नहीं करना ओके Huh. कूल अगर कभी लगता है कि ज़्यादा टाइम चाहिए तो ऑब्वियसली टेक सम टाइम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने बोल दिया कि यू शुड डू 25 टिल 25 टुडे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 25 तक करना ही करना है अगर नहीं मन कर रहा है तो दैट्स ओके तब उस दिन थोड़ा कुछ और कर सकते हो टेक सम रेस्ट और समथिंग एल्स ठीक है Huh. Huh. ओके ओके और मतलब व्हाट आई यूज्ड टू डू व्हेन आई यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ना मतलब जैसे लेट्स से कि अगर मैंने किसी प्रॉब्लम को पढ़ लिया मान लो कि अभी एक कोई प्रॉब्लम ऐसे ही खोल लेते हैं अभी मान लो कि मैंने ये वाला प्रॉब्लम खोला और व्हेन आई यूज्ड टू प्रैक्टिस व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैंने अगर लेट्स से आई रेड दिस प्रॉब्लम आई रेड द होल प्रॉब्लम अभी लेट्स से आई एम नॉट एबल टू थिंक ऑफ एनी सोल्यूशन तो मैं क्या करता था कि आई कीप मतलब मैं इस प्रॉब्लम को समझ गया ना अपने दिमाग में सो आई कीप थिंकिंग अबाउट इट whatever I am doing Huh. let's say कि if I am eating Yes. something still I am thinking about this problem कि अगर कैसे सॉल्व हो सकता है मतलब समझ रहे हो Yeah. मतलब मैं कुछ भी कर रहा हूँ बट मेरा दिमाग वहीं चल रहा है तो तुम लोग भी ऐसा Yeah, ट्राई yeah. कर सकते हो कि बेसिकली इट्स नॉट कि Okay. जब तुम लोग बस बैठे हुए हो कंप्यूटर के सामने तभी सोचना है लेट्स से तुमने पढ़ लिया Mm. प्रॉब्लम अब जाके कुछ और एक्टिविटी करो बट थोड़ा सा सोचते भी रहो उस बारे में तो कई बार ऐसा भी होता था Huh. मेरे साथ Huh. कि व्हेन आई एम ईटिंग समथिंग और व्हेन आई एम डूइंग समथिंग एल्स तब मुझे आइडिया क्लिक करता था कि अरे इसको ऐसे कर सकते हैं समझ आ रही बात तो ऐसे भी कर सकते Okay. हो तुम लोग भी और समटाइम्स लाइक आई एम नॉट जोकिंग समटाइम्स मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि वाइल वाइल आई एम इन स्लीप तो इन ड्रीम्स मतलब मेरे को कुछ कुछ हो रहा है मतलब कुछ कुछ सोल्यूशंस आ रहे हैं दिमाग में अजीब अजीब व्हेन आई Huh. यूज्ड टू प्रैक्टिस Okay. अ लॉट ये होता था मेरे साथ Yeah, that's बट आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू डू दिस मच एक्सट्रीम प्रैक्टिस बट आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू कि व्हेन यू हैव रेड सम प्रॉब्लम मतलब इट्स नॉट कंपलसरी कि जस्ट तुम वहीं पे बैठे बैठे सॉल्व करो मतलब यू कैन डू समथिंग huh. एल्स जस्ट गो फॉर अ वॉक कीप Correct. थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम कि हाउ कैन वी डू इट Mm. ठीक है Okay. हाँ और वेन एवर यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम एनी प्रॉब्लम तो मतलब उसको अच्छे से याद रखना है कि हाँ वो मतलब कुछ नया सीखा है वो आगे भी यूज़ होगा ही होगा किसी और प्रॉब्लम में राइट Mm. फॉर एग्जाम्पल Yeah. द लाइट्स आउट प्रॉब्लम सो इन दैट प्रॉब्लम वी एक्चुअली डिस्कस राइट कि हाउ टू आइट्रेट द नेबर्स एफिशिएंटली तो वो चीज़ें ना तुम्हें मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना है अभी राइट आई डिस्कस ना कि हाउ वी कैन Huh. आइट्रेट ओवर द नेबर्स एफिशिएंटली इंस्टेड ऑफ Yeah. making a separate case for each instead of Yeah, making a yeah, separate yeah. case we can actually run a loop which will iterate over all the Leetcode. neighbors Yeah. तो वो एक स्मार्ट तरीका है ना तो वो तुम्हें थोड़ा सा याद रखना है अपने दिमाग में कि हाँ वी कैन एक्चुअली यूज दिस Okay. मेथड Huh. इन फ्यूचर एज वेल कुछ भी चीज़ अगर हम नहीं Okay. सीखते हैं तो उसको भूलना नहीं है बिकॉज इट विल बी यूज इन फ्यूचर फॉर श्योर ठीक है ओके so now today's topic right so if we open Yeah. our drive so I've started the recording right yeah cool yes. So if we open the DSF session plan, so we are actually today we will be having session 2, okay? Which is this two Yeah. pointers approach, sliding window, hashing. As you can see कि थोड़े ज़्यादा टॉपिक्स हैं आज तो इन सारे Yeah. टॉपिक्स पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनेंगे ठीक है तो Huh. यू कैन एक्सपेक्ट सम लाइक अराउंड 10 to 15 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस सेशन मतलब आफ्टर Okay. दिस ठीक है Okay. एंड द पॉइंट इज कि Hmm. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे ना उतना ही ज़्यादा हमें समझ में आने वाला है बिकॉज इन अ That's true. सेशन ऑफ 2 hours आई कैन नॉट टीच एवरीथिंग but what I can do is I can give you basic foundation and then we will solve a lot of problems. We will discuss a lot of problems as well in the short meetings. तो उससे तुम्हें आइडिया लगेगा कि Yeah. हाँ what like उससे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे से आएगी right when we will be solving a lot of Huh. problems. Okay, cool. So I think we should start our session 2 now. Yes. Okay. So yeah, so if you remember from past session we discussed about some things like prefix arrays and we discussed about difference arrays right तो Yeah. ये चीज़ें काफ़ी यूज़फुल होती हैं टू सॉल्व सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स राइट फॉर Yeah, एग्जांपल they are. अगर
like if there is an array and I'm asking you something about, if I'm asking you some query about subarray, you should give a thought to prefix arrays, right? Because a subarray is nothing but a larger Yeah. prefix minus a smaller prefix, right? If this is the larger prefix, Yeah. if I subtract the smaller one from it, somehow, if I'm able to remove the contribution of smaller one from the larger one, it will give me the value of subarray. So basically, we got an idea that whenever someone is asking me about some information about a subarray, I should think about prefix array. Like it can be possible that the problem is solved by prefix array, or it cannot be, right? Because there are some problems like which can be solved by prefix arrays, but there are some more problems as well जिसको हम prefix array से solve नहीं कर सकते हैं. Basically, I'm telling you कि you should give a thought about prefix arrays because you know this topic, right? This is actually a power in your hand. Yeah, कि it is. you can actually use it अगर if you are able to. Similarly, while discussing difference array, I told you कि when we are having query something like this, कि update LRX, it means in a range you need to add X to everybody, right? So instead of adding X to everybody, what we can do is we can update our difference array in constant time for every query, right? And at last we can print the Yeah. main array. That's the use case of difference array. Basically, you can say these are some tools to solve or to make your life easier in certain kind of situations, right? Similarly, today also we will be talking about some techniques. Okay, so today in this session we will be talking about two pointers method. Then we will be talking about sliding window. Sliding window is also a method to solve certain kind of problems. And then we will be talking about hashing. What actually hashing is and how to solve problems related to that. Because these are also some tools. So I'm also going to add some more powers to you today, okay, to solve certain kind of problems. So let's start with two pointers. Two pointers method. अब as the name suggests, कुछ idea आ रहा है दिमाग में while just listening to this two pointers method. We're gonna use 2 pointers. So basically, have you heard of Like pointers in C or C++? yeah, like pointer and pointer to pointer. Yeah, but so let me tell you, this pointer that I'm talking about right now is different from that pointer. That pointer actually used to store addresses, right? मतलब Yeah. when you do this, कि in Yeah. star PTR is address Yeah, of we A. know all this. So this pointer is a different thing. Just forget about it right now. ये pointer, I'm not talking about those pointers right now, ठीक है? This is actually a programming concept, pointers in C. ये तो अलग है. ये इसको भूल जाओ. Okay. Today we will be talking about other thing. मतलब two pointers का मतलब as the name suggests, we will be having two pointers. Now what does this pointer suggest? This pointers is not related to your pointers in C or C++, ठीक है? That you have studied. Okay. This is different thing. This is actually you can say position. You will be having two position or you will be having two index. You can say you will be having two pointers. Pointers are just a points. For example, अगर if I'm talking about an array, okay? 0 1 2 3 4 5 6 7, and I have to solve a problem on it on this array. So basically I'm using two pointers. Let's say first pointer is standing here and second pointer, let's say, is standing here, and throughout my process I'm actually changing their position. Let's say in some case I'm incrementing this, in some case I'm decrementing this, in some case I'm decrementing this, incrementing it simultaneously. I'm doing something, but the point is I'm keeping two pointers, or you can say two positions, right? Because this pointer is actually telling you I'm standing at this position. This is actually position, right? Position 0, 0th position. Similarly, this pointer is saying I'm standing at 7th position. So basically two pointers means you can say two positions, and these position or these pointers will be changing, like we will be changing them along मतलब throughout our process, right? So वो depend करता है that it actually कि how you will be changing, it will depend on the problem, ठीक है? But अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि we will be using two pointers. मतलब दो positions होंगे, उनको आगे पीछे कुछ कुछ करेंगे हम, and from that only we will solve the problem, ठीक है? Okay. Similarly, you can say कि these are nothing but index. Now this problem, like this concept, is not only limited to two pointers. मतलब you can also have three pointers, you can also have four pointers in some problem, you can also have k pointers, right? But the point is कि we will start our discussion from two pointers. Okay, अगर two pointers method clear है,
So in some problem, let's say if it requires you to solve it using 3 pointers, you'll be able to solve it because you know how to Yeah. apply 2 pointers, right? This will be Okay. just an extension. Okay. Yeah. ओके नाउ ये जो दो पोजीशन है व्हाट इट कैन रिप्रेजेंट राइट मतलब ये जो 2 पॉइंटर्स हैं हमारे व्हाट व्हाट इज द इंफॉर्मेशन represented by 2 pointers. These 2 pointers, what can be the information that it can Yeah. represent, right? In Okay. some problems, if we have 2 pointers, let's say this is left pointer and this is right pointer, this can represent a range, right? Let's say if we are talking about this particular range, Left and right. right? So Okay. they can represent range, and range is nothing but subarray, right? Yeah. Yeah. Because Yeah. what do we mean by subarray? Subarray is nothing but a contiguous range, a contiguous part of your array. Yeah. 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 And to Yeah. represent a subarray, you just need 2 pointers, which is start Oh pointer yeah. and end pointer, right? We already discussed about it in the first class. Yeah. So these Yeah. 2 pointers can represent a range. They can also represent a pair, right? Let's say कि अगर ये दो positions and let's say this is a0 and this is a7. So these 2 pointers are actually representing a pair, which is nothing but a0 comma a7, right? They can also represent a pair. Okay. एंड सिमिलरली मतलब यही दो चीज़ें हैं बेसिकली जो ये लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? 2 पॉइंटर्स या तो दे कैन रिप्रेजेंट अ Okay. रेंज और दे कैन रिप्रेजेंट अ पेयर. अब क्या चीज़ रिप्रेजेंट करेंगे डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम. ठीक है, Right. राइट. नाउ अब ज़्यादा थ्योरी हो जाएगा तो लेट्स सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड वी विल सी कैसे एक्चुअली वी यूज 2 पॉइंटर्स. ठीक है, so to discuss the problem just directly search 2 pointers approach and open this block from Leetcode. ठीक है, Okay. okay. Um. Now let's start by solving a problem. Abhi let's see what is the problem. ठीक है, the problem Yeah. is given a sorted array. ठीक है, the array is sorted. ठीक है, Yeah. having n integers. Find if there exists any pair of elements ai comma aj such that their sum is equal to x. For example, Okay. if the array is something like this, ठीक है, let's say if your Yeah. array is this 10, 20, 35, 50, 75, 80. 80. ठीक है, and let's say they have given कि Okay. x is 70. Now you need to tell me whether there exists any pair in this array. By pair I mean two integers. Okay, where there Yeah. exists two elements in this array such that the addition of these two elements is actually 70. So just by looking at this array, can you tell me whether there exists a pair or not whose sum is 70? 20 and 50. Correct, 20 and 50 is the pair, right? Yeah. So in this case you should return true because there exists a pair. Yeah. Okay, whose sum is Yeah. 70. Yeah. Okay, yeah, so this is actually the problem. So got the problem statement right? Yeah. Yeah. Hmm. Understood. Now if you understood the problem statement, please take a minute or two and to think about it, मतलब to at least think about the brute force approach. So first of all tell me brute force क्या होता है, the brute force approach क्या होता है? It's like you don't have to think, but it's like not using data structures. It's just like No, whatever it's not like not using data structure. It's like the simplest approach I can think of. इसका definition यही है. It's the simplest approach we can think of. Okay, the simplest approach that we can think of. It's not like we cannot use data structure. In some cases, brute force approach will include use of data structures as well. But the definition should be it's the simplest approach that we can think of, right? That's brute force approach. So please take a minute or two to actually think about the solution. Okay, at least the brute force approach. Okay, let's take pause of 1 minute or 2 minutes. Okay, meanwhile, please think about this problem. Given an array and given integer x, the array is sorted. Okay, that's the point. Array is sorted. As you can see, this array is sorted, right? 10, 20, 35, 50, 75. It is sorted in ascending order. Similarly, you will be given a sorted array and a integer x, and you need to tell me whether there exists a pair such that I is not equal to j, right? I should not be equal to j, and ai plus aj should be equal to this given value x. Okay? Yeah, please take some time. Think about this.
Yes. So, So, what I think is that you would just have like two for loops that for I and j, and then you would have like a that goes through the array, and just a normal if statement that checks like a of I plus a of j is x, and then you return true. correct. So basically, Yeah. basically what you have said just now is ki let's try out all the pairs, right? Because Yeah. when we run two nested loops, so we are actually trying out all the pairs, correct? Yeah, that's what we Basically, would do. what will happen in your case? So what's your name? Like, I actually got Arohi. Aruvi. Okay. So Arini, did you get the point? What Yeah, Aruhi yeah, just? that was my approach too, yeah. Yeah. So basically, what Aruhi just told me, ki let's say if you are having this array, right? Like let's say this we Yeah. have A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Let's start two loops. First loop, let's say, is red. First loop is having, like let's say the pointer in first loop is red, and the second pointer will be blue. Now what Arohi just told me, ki for we will be Yeah. running two loops, like for I is equal to 0 till I less than, let's say, n, and I plus plus, and for each Yeah. I, what you should do is you should run a nested loop from j is J. equal to, what should I write here? J is Hmm? equal to 0. No, I mean we can also write j is equal Oh, to 0, but will it be I plus 1? correct, it should be Oh, I plus or I 1, plus 1, yeah. because we don't want to count repeated pairs, na? So Yeah, we can you do can that. also write 0 as well, matlab, but still, Yeah. matlab, है ना? So basically, Yeah, exactly. हाँ तो from this, while writing this, मतलब अगर हम ये दो loop लिख देंगे, it is actually nothing but checking all the pairs, right? Yeah. Checking all the pairs, क्योंकि ये कैसे काम करेगा देखो, first red pointer will be at 0 and j will start from Yeah. 1, right? Now j will Yeah. explore everything, मतलब कि whether this pair is equal to, whether this pair is useful. If this is not, then j will Okay. increment, then we will check this Yeah. too. If it is not, then j Yeah. will Correct. increment, 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 increment. Once it reaches the end, then we will increment our I, correct? I am going to do the same thing. And Yeah. then we will do the same thing. So this is how actually we check for all the pairs, correct? फिर j Yes. ऐसे ऐसे So, ऐसे ऐसे करेगा and so on, mhm. right? हाँ, so this is So, actually your brute force approach. कि देखो brute force में क्या होता है, simplest approach होती है हमारी. So the simplest approach is let's try out all the pairs, right? Let's try out yeah. all the pairs, and if the sum is actually equal to x, so I just need to write a if condition कि if ai, मतलब a of I Yeah. plus a of j is equal to x, then return true, right? I just need to write this, correct? Correct. So now Yeah. what should you, what do you think, what will be the time complexity of this approach? O of n squared. Correct, because if there are Okay. n, so basically what we are doing, Yeah. we are checking out all the pairs, right? So agar let's say Hmm. if an array has n elements, how many pairs it will be having? N elements will have Hmm. You just need to choose two elements, so n choose two, right? n choose nc2, 2. N choose 2. Oh, yeah. C of n choose n, correct. nc2, which Yeah. is n into n minus 1 by 2, correct? Yeah. So basically to check all these pairs, n into n minus 1 by 2 कितना होता है? Around n square होता है. Yeah. It's n squared. Basically the time complexity has to be order of n square, right? Since we are checking all the pairs. Yeah. You can also look here as well. Ki for each I we are running loop around n times, so basically it's n square.
To be exact, it's Yeah. actually this. मतलब exact calculation तो ये Yeah. हो रहा है n into Exact n minus हाँ. 1 by 2. Yeah. But n into n minus 1 by 2 को if we open up, it will become n square by 2 minus n by 2, and big O of this function will be big O of n square, right? Because while discussing Yeah. Yeah. order time complexity, we actually neglect these terms, है ना? Neglect the yeah. Neglect the lower order terms, and we also neglect these constants. So this Yeah. will be order of n square, correct? The brute force approach will be order of n square, Correct. correct? Okay. Yes. Now, so basically in an interview, while you are in an interview, an interviewer through like interviewer, let's say कि उसने ये problem तुम्हारे ऊपर दिया है, ठीक है? तो first step is you discuss the brute force approach with your interviewer, ठीक है? Okay. So brute force Okay. approach, क्योंकि brute force approach is the simplest approach that we can think of, right? और brute force approach अगर हमें पता Okay. है तो it will be easier for us to optimize further. So this is the first That's step true. while in an interview. First you discuss the brute force Okay. approach. Whatever comes to your Yeah. mind, whatever the simplest approach that comes to your mind, discuss it with your interviewer. Then your interviewer will Okay. ask you, okay, hey, your approach is good, but what is the time complexity and space complexity of your approach? So if we look closely, the time complexity of brute force approach right now is order of n square, right? And Yeah. what is the Correct. space complexity? Space complexity means ki how much extra space I'm using. So I'm not using any extra space, right? I'm just Yeah. declaring some variable, and that too like two variables. So two variables is order of one, right? Yeah. So it should be order of Yeah. one. So the interviewer will ask you these two things. Now interviewer will say, Okay. now interviewer will say, okay, your approach is good, but can you optimize this time complexity for me? Because order of n square is not looking very good to me, right? So can you optimize this for Yeah. me? Now let's think about optimizing the process, okay? Okay. And that's where your two pointers will come. So basically, if we read this log also, first they have discussed the naive approach using loops, right? Naive approach is actually the same. अगर तुम लोग को कोड देखना है तो ये भी देख लो. They have actually run two loops from zero. और अभी अगर टू लूप्स जीरो जीरो से स्टार्ट करेंगे तो वी नीड टू मेक श्योर कि हम ये वाला केस अवॉइड करें व्हेन आई इज एक्चुअली इक्वल टू जे, बिकॉज इन दैट केस वी Oh विल बी yeah. वी विल बी चेकिंग द सेम एलिमेंट, है ना? Yeah. इट इज ऑलरेडी गिवन इन द प्रॉब्लम कि आई एंड जे शुड बी डिफरेंट, ठीक है? Okay. Yeah. Now if ai plus aj is actually equal to x, they are returning true, that's it, है ना? Yeah. And they are Yeah. also doing some optimization. The optimization is if ai plus aj is greater than x, right? if you see closely AI. if you see closely in this array, ठीक है, मान लो what I have done, what I do, okay, let's start the for loop, and right now I'm checking for 10, and then let's say I'm checking for 20, okay? Then in the next iteration I'll check for 10 with 35, correct? Yeah. Then I'll check with 10 with 50, and then I'll check with 10 and 75. Now tell me one Yeah. thing, Yeah. 10 and 75 is 85, 10 plus 75 is Yeah. 85, and everything after 75 will be greater than or equal to 75 because the array is sorted, right? Yeah. Yeah. So now if 10 plus 75 is greater than your desired Oh. result, so 10 plus anything after it will be also greater than your Yeah. desired result, right? Yeah. So I get that's it why now. after Yeah. getting this, after getting a sum which is greater than your desired result, you should break. Because अगर तुम आगे जाओगे तो फिर values Right. बड़े ही होते जाएंगे. So they are doing Yeah. some optimization, but still it is order of n square. Still this approach is order of n square, ठीक है? Oh yeah. Okay. Now let's try to think some more approach, ठीक है? So basically, let Okay. me just again draw the array. For example, the array is let's say if I want to have some SAT, so 10, 70, or maybe let's say 100 अगर चाहिए तो. Mm. So basically 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है? Mm. Let's say this is your array and the x Okay. is 100, okay? Okay. Now how to actually optimize the process? So we know how to solve this problem in order of n square, correct? Yeah. Okay, now we will use two pointers here. Let's see how, okay? 2 pointers. Okay. What I'll say ki let's keep one pointer here, Okay. okay? Let's keep one pointer at the beginning, and let's keep another pointer at the end, okay? this Okay. this is how you will start, okay?
Now if you look closely, if I increment in some case, in any case, if I increment this blue pointer, right? ये जो blue pointer है, let's say I'm talking about the sum which is a of blue plus a of yellow. Okay, Yeah. I'm talking about this sum. Now tell me one thing, if I increment this blue pointer, right? So this sum will increase or decrease if I increment this. Increase. Sum will also Because increase. the array is sorted. Yeah. Yeah, sum will also increase. And let's say I have a yellow pointer as well. And if I decrement this yellow pointer, let's say, in some case, so the sum will increase or decrease? Decrease. Decrease, correct. Because while if I decrement it, so its value is decreasing, so sum will also decrease, right? So that's the main key point. अगर तुम्हें ये दो चीज़ें समझ में आती हैं तो that's the main key point कि now what you can do is कि just start from here, मतलब start your process from here कि एक पॉइंटर तुमने स्टार्ट में बिठा दिया, एक पॉइंटर तुमने एंड पे बिठा दिया. नाउ यू आर चेकिंग देयर सम. ठीक है, व्हाट इज द सम राइट नाउ? 10 plus 70 80. 80. 10 plus 80. So now I'll compare कि क्या 80 मतलब क्या है? 80 is smaller than my desired sum, right? 80 is smaller than my desired sum, so I should actually increment this blue pointer. Why I am doing this? क्योंकि देखो एक बात बताओ कि अगर 10 plus 70 80 हो रहा है, ठीक है, and this 80 is actually less than 100, so tell me one thing कि क्या ये 10 किसी यूज का है मेरे? कैन दिस 10 मतलब ये क्या 10 कोई पेयर बना सकता है क्या? इट कैन नॉट मेक अ पेयर, क्योंकि अगर 10 पेयर बना रहा होता तो इसको 90 चाहिए होता, राइट? 100 बनाने के लिए, एंड 90 इज नॉट प्रेजेंट, so it actually means this 10 is useless for me and I should move ahead. Got the point? Yeah. Now my blue pointer is standing here. Now again I'll check what is the sum. 20 plus 70 which is 90. ठीक है, let's say कि 30 is not here. ठीक है, let's assume 30 is not here. 20 है ना, तो 20 plus 70 is 90. I'll check with the sum. मतलब so tell me one thing, what should I do? Sum is 90. So 20 plus 70 is actually 90 and 90 is less than 100. So what should I do? now you should increment the pointer from 20. Correct, I should increment this pointer because 20 is again useless for me, correct? Correct. Wait. Right. Where did the 30 go? No, 30 I have removed. मतलब 30 नहीं है ऐसा समझो, ठीक है? It's not in that. Now my pointer is here, 40 and 70. Now what is the sum? 110. Now 110 is greater than desired. 110 is greater than the desired sum. So what should I do? I should somehow decrement the sum. Remove the yellow pointer. Correct. Then I should move the yellow pointer here. And now what is the sum? 40 plus 60, which is 100, and I got the point. I got the pair. Oh. Basically this two pointer works something like this कि मतलब तुम एक array लेते हो which is sorted. Why it is actually working? Because the array is sorted, है ना? Because since the array is sorted, we know if I'm having two pointers, if I in some point if I want to increase the sum, I should actually increment the blue pointer or start pointer. Yeah. If at some point I want to decrement the sum, I should decrement the right pointer, right? Yeah. Basically ये ऐसा क्यों हो रहा है? Because array sorted था. You cannot do this process on unsorted array. That's true. ठीक है? You cannot do this. So basically now let's take any other example. So for example चलो ऐसा लगे देखो, we have 40 60 here again, और मे बी चलो यही वाला एग्जांपल देखते हैं जो इसमें दिया हुआ है. इसमें कोई सही एग्जांपल दिया हुआ है क्या? 20 50 का है. वेट, 17 में लाइक यू विल गेट 17. इसमें किसी का सम हो जाएगा क्या? 9 plus 8. 9 plus 8. ओके, बेसिकली हाँ ठीक है, मतलब ले सकते हैं, ये एरे भी ले सकते हैं. तो बेसिकली इफ यू हैव 2 3 5 8 9 10 11, ठीक है? And if I tell you कि I want sum as 17 and the array is sorted, what you will do? You'll just do the same thing कि चलो start pointer इधर रख देते हैं, end pointer इधर रख देते हैं. मतलब you can say this is left pointer and this is right pointer. Now what is the sum? Sum is 13. So I tell me something, मतलब is there any way to increment this sum? You will say yes, there is a way. Just increment your left pointer, right? Now
I should actually do this. Now I'll ask you, what is the sum? 14. Is there any way to still increment it? You will say yes. Let's increment. What is the sum? 16. Is there any way to still increment it? You will say yes. So I'll say okay, let's increment it. Now 8 plus 11 is 19. Now I'll say no, 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 I want to decrement the sum now. So you will say okay, no worries, I can do it. So now you just need to decrement this right pointer. Yeah. Because you have two ways, na? You can increment the sum as well, you can decrement the sum as well. So now you just start from left to right one. Yeah. So now 8 plus 10 is 18. I'll again ask you the same thing. Please decrement it. Now you will say okay. Now 8 plus 9 is 17 and you will say yeah, I got the result. Yeah. Now the point is कि ठीक है, अभी तक तो सब सही लग रहा है, right? Tell me what is the time complexity of this approach? And up to when I should do this? Up to when I should do this? I should do this while left is less than equal to right. मतलब while left is actually less than right. Equal to right. No, not equal to, because I cannot count same pair. I cannot count same element. Yeah. So just less than. Okay. Because once they move, मतलब once they मतलब वो ऐसे हो जाते हैं ना, क्रॉस कर देते हैं, उसके बाद you will be counting the same pairs, right? मतलब that doesn't make any sense because you have already checked these pairs with these ones. तो इनको क्रॉस नहीं करने देना है. तो basically we should just only run this process till left is less than right. इतना आ रहा है समझ में? Now to find the time complexity, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली में पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है कि एक पॉइंटर यहाँ पे खड़ा है, एक पॉइंटर यहाँ पे खड़ा है, और ये दोनों आगे पीछे हो रहे हैं. मतलब ये तो आगे बढ़ रहा है और ये पीछे हो रहा है, राइट? एंड एट सम पॉइंट दे विल मीट एंड यू शुड स्टॉप, राइट? सो द पॉइंट इज, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस आई एम डूइंग? O of n. करेक्ट, O of n. व्हाई? बिकॉज थोड़ा सा हमने यहाँ से किए कुछ ऑपरेशन, लेट्स से 5 ऑपरेशन यहाँ से किए, टोटल साइज था 10, और लेट्स से टोटल साइज था 15. तो हमने 10 ऑपरेशन यहाँ से किए, बस दैट्स इट, right? So basically the total operation is the in worst case the total operation is the size of your array, because this pointer will move somewhere here, let's say they meet here and this pointer moves here, so their total distance कितना हुआ? और n हुआ ना, which is nothing but the size, and that's why the time complexity of this approach is order of n. Got the point? अभी ये बताओ कि now you can ask me कि ठीक है हम ये तो समझ गए, but what is the guarantee that we will get the pair every time? गारंटी क्या है उस चीज का, राइट? अब वो डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगेन टेक द सेम थिंग कि वही मतलब 17 है हमारे पास और हमारे पास सेम एरे है, फॉर एग्जाम्पल 2 3. गारंटी क्या है? मतलब डज दिस अप्रोच गिव्स अस एनी गारंटी कि हम हमेशा पेयर को ढूंढ लेंगे? लेट्स से इफ द पेयर एग्जिस्ट, एज यू कैन सी द पेयर एग्जिस्ट, राइट? अभी मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 17 ना होके ये कुछ अलग होता, मतलब मान लो कि ये 15 होता और यहाँ पे और भी एलिमेंट्स होते हैं, लेट्स से 13 है एंड 14 भी है, नॉट 13 एक्चुअली, मतलब 15 है ना, तो अब हम क्या क्या नहीं ले सकते. मान लो यहाँ पे 16 होता, 18 होता, कुछ होता, ठीक है? अभी कोई पेयर दिख रहा है तुम्हें जो 15 बना दे? दिस इज द पेयर, राइट? अब ऐसे सोचो कि व्हाट इज द गारंटी कि ये जो सॉल्यूशन, मतलब ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं वो हमेशा हमें सॉल्यूशन देगा. तो व्हाट आई एम सेइंग कि ठीक है, वन पॉइंटर इज स्टैंडिंग हियर, वन पॉइंटर इज स्टैंडिंग हियर, ठीक है? एंड दिस इज द एक्चुअल योर पेयर, ठीक है? 10 और 5 ये एक्चुअल पेयर है. अब ऐसा समझो कि जब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो आइदर इन सम केस यू विल बी इंक्रीमेंटिंग दिस और आइदर इन सम केस यू विल बी डिक्रीमेंटिंग दिस गाय, ठीक है? और लेट्स से इन सम केस तुम्हारा ये जो पॉइंटर है, ये जो लेफ्ट वाला पॉइंटर है, ये इंक्रीमेंट करते करते 5 पे रुक गया, ठीक है? ये 5 पे भी खड़ा है और ये मान लो पॉइंटर यहीं पे खड़ा है. तो अभी क्या होगा एक्चुअली, मान लो कि ये पॉइंटर पहले 5 पे पहुंच जाता है. अभी देखो ध्यान से क्या होगा, व्हाट इज द सम? 5 + 18 23. यू विल कीप ऑन डिक्रीमेंटिंग दिस सम, राइट? क्योंकि 5 अगर 10 के साथ ही if 5 is having a pair with 10 and they together is giving sum as 15, so all of them right to 10 will give me a sum which is greater than 15, right? So yes, correct, समझ आ रहा है ना? तो बेसिकली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर तुम एक बार 5 पे आके खड़े हो जाओगे ना, तो ये 5 एक्चुअली में वेट ही करेगा 10 को आने का. ये ऐसे करते करते डिक्रीमेंट करता ही जाएगा और एक फिर तुम 10 पे पहुंच ही जाओगे, एंड that's where you will get the pair. So it is actually guaranteed कि you will get the pair, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि तुम 5 पे खड़े हो गए
और ये जो पॉइंटर है मतलब मान लो कि वो पीछे चल रहा है अभी, तो वो पक्का ऐसे ऐसे करके आएगा ही, तुम इसको इंक्रीमेंट कर ही नहीं पाओगे. वाई? बिकॉज if this is the desired pair, so all of them Yeah. will give us sum greater than 15. So obviously you need to decrement this first before incrementing this guy. आ रही है बात समझ में? And that's where you will get your pair. The point is this approach will always give you correct result. Got the point? So basically this two pointers approach, actually just let me repeat. ये two pointers approach मैंने क्या बताया कि if the array is sorted and you want to find a pair such that कि ai plus aj gives you some k, what you can do is just start the process something like this. Keep this first pointer, let's say you can say first pointer here, and keep the second pointer here. Now based on the sum of these two pointers, you will decide whether to increment first pointer or whether to decrement second pointer, and you will keep doing this process while first is less than second. क्योंकि सम केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पास पेयर ही एग्जिस्ट ना करे, राइट? उस केस में क्या होगा कि तुम्हारा सर्च स्पेस ही खत्म हो जाएगा. फॉर एग्जांपल लेट्स से तुम्हारा एरे ये है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? और जो तुम्हें सम चाहिए वो लेट्स से व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल हियर 13 ना. लेट्स से तुम्हें 14 चाहिए सम. यू विल स्टार्ट योर प्रोसेस समथिंग लाइक दिस. अब 1 + 7 क्या है? 8 है. यू विल इंक्रीमेंट दिस 9, increment this, increment this, increment this, increment this. You reach here, you didn't get anything. That's it. You should stop when first, मतलब while first is less than second, you should complete this process. अब इसके बाद क्या होगा? First और second एक ही पॉइंटर पे खड़े हो गए, तो you should stop there. Got the point? Because यहाँ पे कोई पेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता है. अगर पेयर एग्जिस्ट करता होता तो पक्का तुम्हारे दोनों पॉइंटर्स वहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं. That's what we discussed, right? So should I implement it quickly? Yeah. Implementation actually very easy है. देखो यहाँ पे यहीं पे देख लो. तो two pointers technique पढ़ते हैं. We take two pointers, one representing the first element and other representing the last element of the array, and then we add the values kept at both the pointers. If their sum is smaller than x, then we shift the left pointer to right. That's what we discussed. Or if their sum is greater than x, then we shift the right pointer to left. It means decrementing the right pointer. In order to get closer to the sum, we keep moving the pointers until we get the sum as x. So basically brute force वाला तो clear था ना, how to implement brute force. ये तो clear है, इसमें तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है. We just need to run two loops. इसमें भी actually ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. You just need to declare your first pointer, your second pointer. Basically जनरली नेमिंग ऐसे ही करते हैं लोग कि एक को आई बोल देते हैं, एक को जे बोल देते हैं, बिकॉज आई जे मतलब हमारे दिमाग में आता है, राइट? वाइल नेमिंग पॉइंटर्स. int I is 0, which is first pointer, right? Int j is n-1, it is representing second pointer, right? Now we should do a process while I is less than j. That's what I discussed. While the first pointer is actually less than the second pointer, you should do a process. The process is we calculate their sum. If we found out that the sum is actually equal to x, we will return 1. It means we got the pair, right? Returning 1 means this function will return true or false, मतलब 1 or 0. ठीक है? So if this function is returning 1, it means you got the pair. ठीक है? Yeah. Okay. Else, if the sum is less than x, what should we do in this case? We should increase the sum. And how to increase the sum? By incrementing the left pointer. Correct? Yes. Else condition is if their sum is greater than your desired value, you should decrement your sum. Then you decrement the second point. Correct. Then you decrement the second pointer, and you keep on doing this process while I is less than j. अब मान लो तुम्हें अगर pair मिल जाता है तो you will return 1. Otherwise you will complete this loop and come below it and you will return 0. Got the point? That's how you will implement this. Now अगर कोई तुमसे पूछता है कि what is the time complexity, so the time complexity is order of n. Why order of n? Because मतलब हमने अभी डिस्कस कर लिया कि ये इधर तक अगर आता है और ये पूरा इधर तक आता है, तो in total they will be traversing the whole array. In total we will be traversing the whole array, and traversing the whole array is nothing but order of n. So are you guys able to get the feel? Keep first actually we were at order of n square, now we got to order of n using some kind of manipulations जो कि हमने two pointers के through की. And why two pointers is applicable here? Because why we are able to move the pointers? Because the array is sorted. Array sorted था इसलिए हमें पता था कि if we know a way to increase sum, we know a way to decrease sum, and that's why we are able to run this process. Got the point?
ओके, नाउ लेट्स ट्विस्ट दिस प्रॉब्लम. तो अभी तक प्रॉब्लम में क्या था कि यू जस्ट नीड टू टेल मी वेदर देयर एग्जिस्ट अ पेयर और नॉट, करेक्ट? Now let's say I tell you, I just give you an extended version of this problem. कि given a sorted array, tell me all the pairs, tell all the pairs ij such that I is less than j, obviously. मतलब ऐसा pairs लिखते हैं हम लोग कि i जो है j से छोटा है, मान लो. Such that ai plus aj should give me x or should give me x मतलब. In first problem, हमें first problem में क्या बताना था? Just tell me whether there exists a pair or not, right? Just a true or false. Are you listening right now? Yeah. Are you here right now? Wait, did you say brute force? No. What I'm saying, this is now the extended version of this problem. Yeah. The extended Mhm, version so, is, yeah. in first problem, you just need to tell me whether there exists any pair or not, right? A true or false thing. Okay. But right now, what I'm telling you, given a sorted array, tell me all the pairs. Because there can be multiple pairs, na? In an array, there can be multiple pairs Oh, I see. Yeah. that gives you Okay. x. For example, agar like Correct. if we have 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, and if I ask you, tell me all the pairs such that their sum is 90. Tell me all the pairs such that their sum is 90. How many pairs are here? 20, 70, Yeah. then 30, Plus 60, 70, 30, then 40, Yeah. 50, right? So you should return this thing to me. Or you should tell me that there are 3 pairs whose sum is 90. Okay? So right now you can also assume that the array is having distinct values. Huh. So tell me Okay. how to solve this problem now. Basically we will be using again two pointers method. अभी two pointers में पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि when we got the pair we are just terminating our process, right? But अभी हमें आगे बढ़ना होगा. देखो कैसे. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो हमारे पेयर्स कौन कौन से हैं. एक 70-20 है, राइट? उसके बाद 30-60 है, Yeah. उसके बाद 40-50 है. 50, 40, yeah. तो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे ना किसी भी एक जनरल एरे में, तो वो पेयर्स किस तरह से दिखेंगे. देखो अगर ये सॉर्टेड एरे, लेट्स से फर्स्ट पेयर इज हियर, ठीक है? इट मींस लेट्स से कि इट्स वैल्यू इज 10, इट्स वैल्यू इज 70, मान लो. अब जो सेकंड पेयर होगा, मान लो कि जो 20 जिसके साथ पेयर बना रहा होगा ना, वो पक्का ऐसी वैल्यूज के साथ ऐसी वैल्यू के साथ ही बना सकता है जो कि इसके लेफ्ट में होगी, राइट? Yeah, correct. बिकॉज वाइल मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर यू हैव इंक्रीमेंटेड सम वैल्यू, तो तुम्हें कुछ मतलब वैल्यू डिक्रीमेंट करनी होगी ना यहाँ से. कहने का ये मतलब है कि अगर 10 और 70 80 होते हैं, तो अब ये जो 20 है वो पक्का मतलब इधर किसी के साथ थोड़ी बना सकता है ना वो सेम पेयर, No. राइट? बिकॉज यू वांट द सेम सम. Yeah. मतलब 10 + 70 अगर 20 + x है, तो x क्या होगा? 70 70. मतलब +10 - 20, which is nothing but 70 - 10. 70 minus something means 70 के लेफ्ट में. समझ आ रही बात इतनी? हाँ. It actually means that the second pair will be looking something like this. कि वो मतलब इसके अंदर होगा टोटली. मतलब अगर ये वाला पेयर है तो जो सेकंड पेयर है वो इसके टोटली अंदर होगा, राइट? एज यू कैन सी पूरा अंदर है इसके. सिमिलरली जो थर्ड पेयर होगा, मान लो वो अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मान लो कि वो 40 से स्टार्ट हो रहा है. नो, इट कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम 40. लेट्स से इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 30. तो वो इसका जो मतलब पेयर होगा ना, इसका जो साथी होगा और इसका जो कंपेनियन होगा वो यहाँ पे होगा, राइट? सो बेसिकली द पॉइंट इज कि फर्स्ट ये वाला पेयर पूरा आ गया, उसके बाद फिर ये दोनों आएंगे और उसके बाद फिर ये दोनों आएंगे. समझ आ रही है बात? राइट? एज यू कैन सी इन दिस केस ऑल्सो. देखो पहले ब्लू ब्लू हो गया, फिर उसके बाद ही ग्रीन कवर किया, उसके बाद ही येलो ने कवर किया, राइट? द पॉइंट इज कि तुम्हें टू पॉइंटर्स अप्रोच ही जारी रखनी है, बस तुम्हें यहाँ पे रुकना नहीं है. व्हेन यू गॉट द रिजल्ट ना, यू आर टर्मिनेटिंग हियर बिकॉज you just need, मतलब in this problem you just need whether there exists any pair or not, right? But right now in this problem we want all the pairs. ठीक है? अब हमें क्या करना है? देखो अब हमें पता है कि when we start at two pointers, मतलब मान लो कि this is first pointer and this is second pointer. अब जब तुम इसको स्टार्ट करोगे ना तो पक्का एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये 20 और 70 पे आके रुक जाएंगे दोनों पॉइंटर्स. लेट्स सी. तो हमें अभी डिजायर्ड सम क्या चाहिए था? 80, राइट? 80 नहीं 90 चाहिए इस केस में. तो
20 + 70 तो 90 होता है ना, तो हमें 90 चाहिए ओह कि हाँ, मुझे लगा 80, हाँ। तो अभी 10 + 70 कितना हुआ 80। तो एल 80। से ठीक है, यू नीड टू इंक्रीमेंट योर सम, सो इंक्रीमेंटिंग सम कैसे करेंगे, बाय So इंक्रीमेंटिंग द we लेफ्ट were, पॉइंटर, yeah, राइट। incrementing अब it. हम यहाँ पे आके खड़े हो गए। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हम एक्चुअली में हमें एक पेयर मिल चुका है, राइट, ये देखो, सही है, 20, प्लस हाँ। 70। तो राइट नाउ हम यहाँ पे हमारा काउंटर इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब लेट्स से कि यू जस्ट नीड टू रिटर्न द काउंट ऑफ पेयर्स। तो लेट्स से कि एट इनिशियलाइज, मतलब एट इनिशियली तुमने काउंट 0 कर दिया था। नाउ वेन एवर यू फाइंड अ पेयर यू आर इंक्रीमेंटिंग द काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें काउंट मतलब एक पेयर मिल गया ना, 20 + 70, तुम बोलोगे काउंट प्लस Yeah, प्लस, ठीक है। yeah. अभी हमें क्या करना चाहिए, what should we do, should we increment this or should we decrement this, or can we do both, or can we do any one of it, क्या करना चाहिए। We can do any one of them, right? करेक्ट, वी कैन, देखो तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम किसी एक को भी कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो डू बोथ, क्योंकि दोनों को भी करोगे ना तो कोई नुकसान नहीं है। वाई, वाई कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज वी नो कि इफ द वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, और अगर मैं 20 से इसको बढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि 20 का तो पेयर फिर 70 के साथ ही बन सकता है, 20 का किसी और के साथ बन सकता है क्या, नो, Yeah, बिकॉज 20 correct. + x अगर 90 है तो x को 70 ही होना पड़ेगा, राइट। एंड सेम अप्लाइज फॉर 70 एज वेल, कि 70 का भी पेयर 20 के ही साथ बन सकता है, उसका भी पेयर किसी और के साथ तो बन नहीं सकता। द पॉइंट इज Yeah. यू हैव टू चॉइसेस, मतलब तुम इसको भी इंक्रीमेंट कर सकते हो, इसको भी डिक्रीमेंट कर सकते हो, या तुम इसको भी इंक्रीमेंट इसको भी डिक्रीमेंट साथ में भी कर सकते हो, मतलब एनीथिंग यू कैन डू, सब चीज वर्क करेगा। तो लेट्स से व्हेन वी फाउंड अ पेयर वी आर इंक्रीमेंटिंग द लेफ्ट पॉइंटर, लेट्स से, ठीक है। Yeah. तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आ गए। अब टेल मी वन थिंग, क्या होगा, 30 + 70 तो बड़ा हो गया, तो हम इसको डिक्रीमेंट करेंगे, राइट, ये यहाँ पे खड़ा। अब 30 + 60 फिर से एक पेयर बन गया, तो अब मैं बोलूँगा काउंट प्लस प्लस, एंड सिमिलरली वी विल कंटिन्यू आवर प्रोसेस, समझ आ रही है बात। हाँ. एंड सिमिलरली यू विल काउंट ऑल द पेयर्स, मतलब क्योंकि तुम्हें पता है ना कि जो ये प्रोसेस है वो हर पेयर पे जाके रुकेगी एक बार, एंड द प्रूफ इज Yeah, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि व्हाई इट विल मतलब स्टॉप एट अ पेयर, है ना। द प्रूफ है कि देखो, तुम्हें पता है कि जो पेयर्स हैं वो ऐसे दिख रहे होंगे, मतलब पहले रेड रेड वाले आएंगे, फिर ग्रीन ग्रीन वाले आएंगे, फिर येलो येलो वाले आएंगे, तुम्हें पता है ये चीज़, राइट। नाउ टेल मी वन थिंग, कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को, तो पक्का जब लेट्स से कि ये पॉइंटर 10 पे आके खड़ा हो जाएगा, तो ये वाला जो पॉइंटर है ना, वो इस पॉइंटर के लिए वेट करेगा कि ये 70 पे कब आ रहा है, राइट। Yeah, right. एंड वंस यू गॉट दिस पेयर, सो यू आर श्योर कि तुम्हें ये वाला पेयर तो मिल जाएगा, 10 और 70 वाला। एंड सिंस यू आर वेरी श्योर फॉर दिस पेयर, तो सेम लॉजिक अप्लाइज फॉर दिस पेयर ऑल्सो, कि जब तुम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करोगे ना आगे, तो तुम्हारा जब पॉइंटर इस पे आके 20 पे आके रुक गया, तो सेम पॉइंटर ये वेट करेगा 60 पे आने का, and similarly you will get 20 and 60 as well, and similarly you will get this and this as well. So the point is you will again count all the pairs using 2 pointers. Got the point? Yeah. So basically just the code क्या change होगा, देखो यहाँ पे, instead of return 1 you should just write this, every time you got a pair just increment your count, and then we should मतलब you can either increment left pointer or you can either decrement right pointer, or you can do both as well, इसी में भी कुछ मतलब नुकसान नहीं है, करेक्ट। Yeah, either way works. Yeah. ओके, बट राइट नाउ यहाँ पे देखो मैंने एक चीज़ लिखी थी कि द एरे इज हैविंग डिस्टिंक्ट वैल्यूज, राइट, बट व्हाट if it is having same values, मतलब if it can have duplicates as well. For example, let's talk about this case, 20 20 20, 30 30, 40 40 50 50, या चलो ठीक है, एक मिनट, तो ऐसे सोचो कि we have 10, then we have 20 20 20, and we have 70 70, and we have let's say यहाँ पे 100 है हमारे पास, and here we have some random values की 45 37 47 है, here we have some random values, ठीक है। and right now I want the desired sum as 90, ठीक है। Okay. तो टेल मी वन थिंग, कि कोई पेयर दिख रहा है जो 90 देगा, पहले तो इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, 45 47 40, 70 and 20. correct, 70 and 20. 70 and 20. 70 and And if I 20. ask you how many pairs are here, so you will say देखो, Two. no, there are a lot of pairs, Six. हाँ, correct, 6,
Oh, like जैसे that. Yeah, हाँ I दे आर know that. डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, मतलब ये एक्चुअली में डिफरेंट इंडेक्सेस हैं, Correct. तो हम डिफरेंट ही मानेंगे इनको. बेसिकली इफ आई आस्क यू Oh, huh. 4 5 6 7 8 9, if I ask you index wise tell me how many pairs are here, so you will say देखो Oh. पहले तो 1,7 का एक पेयर बनेगा, देन Hmm. 1,8 का एक पेयर बनेगा, देन 2,7 का एक पेयर बनेगा, सिमिलरली Hmm. 2,8 3,7 3,8, so you will get 6 pairs, correct. Correct. Now let's start a two pointers method, ठीक है. Okay. Now let's see what happens. तो अगर हमने टू पॉइंटर्स मेथड स्टार्ट कर दिया, लेट्स से दिस इज योर लेफ्ट पॉइंटर, लेट्स कॉल इट राइट, एंड लेट्स से वी हैव आवर राइट पॉइंटर इज हियर. अब हम जब ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे तो हमें पता है कि हमारा लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे आके रुक जाएगा, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा ना व्हेन लेफ्ट पॉइंटर इज हियर एंड राइट पॉइंटर विल बी हियर, राइट. Hmm. एंड यू गॉट एक्चुअली अ पेयर, करेक्ट. What should you do now in this case? You will say count plus plus. You I got the increment. point. Okay. Yeah. Now, what should we do? So now you will go to the left from the right side. So basically, you are saying कि increment left pointer, right? No, I was thinking of. Oh, I was thinking backwards, but yeah, that's right. Increment the left pointer. Okay. So if I I was going to decrement the right pointer. हाँ, you can but also do that. मतलब yeah. बताओ क्या करना है अभी. Yeah, we can increment the left one. Yeah. Okay. If I increment the left pointer, अभी बताओ क्या हुआ. Again we got the pair, right? Same pair, yeah. Yeah. So basically at first time we got 1,8. Now we are getting what? 2,8. Yeah. What should I do now? Incrementing left pointer, correct? Yes. Yeah. Now I got 3,8. 3,8. 3,8. Now what should I do? Incrementing left pointer again. Yes. And then I should decrement right pointer because 45 plus 70 will be like a lot, है ना. Yeah. So it the would point be- is कि yeah. अभी तो हो गया, मतलब ये प्रोसेस ऐसे करके ऐसे मतलब ये ऐसे नीचे नीचे आके कंप्लीट हो जाएगा. तो टेल मी वन थिंग कि आर वी एबल टू गेट ऑल द पेयर्स? No. नो, राइट, बिकॉज यहाँ पे तो सिर्फ 3 ही पेयर्स आए, बाकी तो आए नहीं. ऐसा क्यों हुआ बताओ? Hmm. ऐसा इसीलिए हुआ, Because देखो ऐसा क्यों हुआ, because when you are at this position, when you are at left most here and right most here, ठीक है, when you are at this position तुमने क्या किया, तुमने 1,8 को काउंट कर लिया and you told me कि okay increment left pointer, but you shouldn't have done this. Why? Because if you increment this left pointer then you are missing these cases, जो कि क्योंकि ये 1 जो है वो सिर्फ 8 के साथ थोड़ी, 1 और 7 का भी तो एक पेयर बनेगा ना, वो तो हमने काउंट ही नहीं किया. अगर हम यहाँ से इफ वी एक्चुअली मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, इसका ये मतलब है कि 1 के सारे पेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, बट 1 के सारे पेयर्स तो कंप्लीट नहीं हुए थे, राइट. बिकॉज लेफ्ट अब कभी भी लौट के 1 पे थोड़ी आएगा, लेफ्ट कैन ओनली मूव फॉरवर्ड. दैट्स द मिस्टेक दैट वी आर डूइंग. वी शुड नॉट इंक्रीमेंट लेफ्ट पॉइंटर राइट नाउ, अदरवाइज 1 के मतलब ये पेयर्स छूट जाएंगे. फ्रॉम द सेम लॉजिक यू कैन नॉट डिक्रीमेंट द लेफ्ट पॉइंटर, सॉरी यू कैन नॉट डिक्रीमेंट द राइट पॉइंटर एज वेल. व्हाई? क्योंकि अगर अभी हम 1,8 काउंट कर लें और अगर हम डिक्रीमेंट कर दें इस पॉइंटर को, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अब तुम यू आर टेलिंग मी कि 8 के सारे पेयर्स बन चुके हैं, बट आई से नो, अभी 8,2 तो नहीं बना है, अभी 8, मतलब 3,8 भी नहीं बना है, राइट. So that's the point. So if we are having duplicates, what we should do in that case? How to count all the pairs in that case? yeah. What? If you are having duplicates, then how to count all the pairs? Do we only increment oh wait, no, that won't Hmm? I was thinking we could like increment and then decrement back again. So you are saying कि let's increment and then decrement. No. The point is they can only move in one direction only. Otherwise Yeah. तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना. तुम अगर बार बार इसको ऊपर नीचे करते रहोगे तो फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, राइट. Oh yeah, that's also true. Yeah, never mind. द पॉइंट इज, इसको थोड़ा और ध्यान से समझते हैं. देखो लेट्स से कि दिस let's say I'm again creating a sorted array. Right now
सेम कलर इज रिप्रेजेंटिंग अ पेयर, ठीक है, मान लो कि रेड रेड यहाँ पे भी है, Yeah. इट Yeah. मीन्स कि दिस 20 20 20, मतलब यहाँ पे ऐसा समझो कि 20 20 20 लिखा है और यहाँ पे 70 70 लिखा है, ठीक है, Hmm. तो रेड Mm. रेड मतलब ये दोनों मतलब सेम पेयर। नाउ लेट्स से वी हैव सम ब्लूज एज वेल, 3 ब्लूज हैं तो यहाँ पे भी 3 ब्लूज, मान लो कुछ और ब्लूज भी हैं। द पॉइंट इज कि मान लो कि जैसे ये 20 है 20 है 20 है, ये 70 है 70 है, ठीक है, सिमिलरली ये 30 है 30 है 30 है और ये 60 है 60 60 60। Uh-huh. Yeah. आई एम टेलिंग यू कि टेल मी ऑल द पेयर्स दैट सम टू 90। तुम्हारा फर्स्ट पॉइंटर यहाँ पे खड़ा हुआ है, सेकंड पॉइंटर यहाँ पे खड़ा हुआ है, राइट। Uh-huh. अभी पता है तुम्हें क्या करना चाहिए, द पॉइंट इज यू कैन स्टिल अज्यूम दिस प्रॉब्लम एज Huh. द सेम प्रॉब्लम एज अबव। तुम अभी भी अज्यूम कर सकते हो कि वैल्यूज डिस्टिंक्ट है, मतलब तुम इन तीनों को एक यूनिट मान लो और इन दोनों को एक यूनिट मान लो बिकॉज दे आर सेम। इट एक्चुअली मीन्स यू हैव 20 into 3 एंड हियर यू हैव 70 into 2, and it actually means कि there is a unit Correct. of 2, मतलब there is 2 units of 70, there is 3 units of 20, it means how many pairs there will be, how many pairs we will be having, 2 into 3, right, मतलब 3 here into 2, Yeah. 6 pairs। the point is कि Correct. Yeah. while you are मतलब तुम यहाँ पे जब हो ना तो increment them Mm. and count all of the same pairs, मतलब once you got a pair, let's say you got a pair ना 20 and 70, अब तुम्हें क्या करना है, नेक्स्ट Yeah. स्टेप इज कि तुम यहाँ से मतलब इसको तब तक इंक्रीमेंट करो तब तक ये सेम वैल्यूज दे रहे हैं एंड काउंट दिस वैल्यू। सिमिलरली तुम इसको डिक्रीमेंट Okay. करो एंड Mm. काउंट दिस वैल्यू, एंड Okay. वंस यू गॉट दीज वैल्यूज विच इज 3 and 2, just increment your count by 3 into 2, got the point, and then your pointer will be standing Mm. here and this pointer will be standing here and they will become न्यू पेयर्स बन जाएंगे, मतलब समझ आ रही है बात। हाँ. द पॉइंट इज कि Hmm. जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स थे तो हमने क्या किया था कि हम ऐसे अज्यूम कर लिए थे ना कि एक 20 है यहाँ पे सिर्फ और एक 70 है यहाँ पे और हम आगे बढ़ हाँ. गए थे। here also you can do the same thing, but here first count all the values, मतलब कितने कितने 20s हैं, all the frequency of 20s, let's say 3 है, count all the Yeah. frequency of 70 as well, वो 2 है, तो now increment this thing। it actually means देखो let me write the code as well तो तुम्हें थोड़ा सा क्लियर होगा। so let's say 2 pointers.cpp, मान लो कि you have an array, so right now arrays and vectors are the same thing, right, so Yeah. Yeah. मतलब obviously Yeah. vector is more useful, ठीक है, Yeah. Yeah. because we can change the size। now let's say कि हम इसका मतलब वो भी ले रहे हैं, we are also taking the input as well and this array is sorted, like it is given क्या है कि a is sorted, ठीक है। Hmm. now a is sorted and can have duplicate elements as well, so I'll say okay, now we need to run 2 pointers method, so my I will start from 0 and my j will start Hmm. from n-1, correct। Yeah. now while I is less than j, what I should do, if I should check the sum, right, so if ai plus aj Yes. Mm. Yeah. is One greater than second. x, बेसिकली यहाँ पे हमें एक x भी लेना पड़ेगा, तो x Yeah. तुम क्या कर सकते हो, इस एरे को इनपुट लेने के बाद ले सकते हो, ठीक है। Hmm. Okay. so if ai plus aj is greater than x, what we should do, if the sum If is greater We we should need to decrement the sum, so how to decrement the yeah, sum, so decrement the points to I. we should decrement the right pointer, मतलब ये right pointer जो for है j इसको minus decrement करना one. पड़ेगा, basically j minus 1, Oh, हाँ. else if ai plus aj is less than x we should increment I, but what if Yeah. they both are equal, that's the case, right, if they both are equal it means you are standing here, if the sum is equal, basically if ai plus aj is actually equal to x, it means you are standing at 20 and you are standing at 70, correct। Hmm. in Yeah. that case what you should do, you should first count all the occurrences of 20, so basically I'll say int count 1 is 0, now I should run again a loop while what I can say here is, okay, what is the value right now, value at left, is a of I, right, Yeah. it means 20, now I'm counting how many 20s I'm having, so while a of I is actually equal to value left, we should increment the count, Yeah. we should increment I and also we should increment the count, okay, Count. Yeah. and similarly I should make count 2 as well, and what is value at right, Yeah. which is a of j, And and same thing. while a of j is actually equal to value of right,
I should decrement j and Yeah. increment the count 2. And at last, how many pairs I got? Count 1 into count 2, right? So I should increment my answer by this thing. Got the point? तो Yeah. अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा? अगर ये लेट्स से ये तुम्हारा आई है तो ये इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे पहुँच गया, क्योंकि अब ये 30-20 के इक्वल नहीं है ना, तो दिस कंडीशन विल ब्रेक, राइट? यू विल ब्रेक आउट ऑफ दिस लूप. Oh, yeah. सिमिलरली जे तुम्हारा ये काउंट किया और यहाँ पे आके खड़ा हो गया. दैट्स व्हाट यू वांट. And the point is how many total pairs they will produce. So 3 from here and 2 from here. So 3 into 2. 2. And Yeah. that's what we are counting. Correct? Oh, okay. Yeah. And similarly, at last, you should just print this sum. After completing this process, you should just print this sum. Got the point? So let's say if int answer is 0. So let's give some input to this. Okay? For example, let's give the same array. For example, मतलब array क्या हो गया? 20, 20, 20. 70, 70, and let's say 30, 30, 60, 60, and let's say 10, 100. Okay? And we want the sum as 90. Okay? So how many elements are here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Let's give the input 11 elements. Then we have 10, 20, 20, 20, 30, 30, 60, 60, 60, sorry, 70, 70, and 100. 3, 3, 6, 3, 9. Okay. And what is the value? Value is 90. How many pairs we should get? We should get 1, 2, 3, 1, 2, so 6 here, plus 4 from here, so 10. 4 is So we are getting actually 10. Correct? yeah. This is how you will solve this problem if you are having duplicates as well. Okay? This is how handling the duplicates is. Got the point? Okay. Yeah. Okay. Now let's solve another problem of 2 pointers, which is, और I want कि अब तुम लोग को solve करना है, ठीक है, ये वाला problem. Can I just quickly go to the bathroom and Yeah, be yeah, back? sure, sure, sure. Let's take a minute. Just Let's one- take a break of 2 Yes, minutes. 1 minute. Yeah, yeah, sure. Okay. Can we start? Wait, Aravi? Hey, we're starting. No, मतलब अगर if she's ready, then we'll start. Yeah, she's heading right now to her laptop. Okay, next. Sorry, I'm back. Yeah, it's okay. So basically तुम्हें 2 pointers का थोड़ा थोड़ा feel तो आया होगा, right? कि हम 2 pointers रख के कुछ कुछ चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? Well, let's try to solve one more problem to get the feel of 2 pointers. So this is the problem. So first tell me, do you have account on Leetcode? Yeah. Okay. So I'm pasting the link of this problem in the chat. Please open it Okay. in your laptop. Okay.
Okay. right? The problem statement is maximum consecutive ones. So basically, you are given a binary array. Binary array means array which is having only 0 and 1. Okay? Correct. What you want to do? Return the maximum number of consecutive ones in the array. For example, अगर ये array है, ठीक है? So what is the answer? The answer will be what is the maximum number of consecutive ones? 3. क्योंकि यहाँ पे तो ब्रेक मतलब एक 0 से ब्रेक हो गया ना, तो इसलिए 3. देखो ये 2 consecutive है और ये 3 consecutive है, तो what is the maximum number of consecutive ones? 3. 3. Similarly here, these 2 is the maximum number of consecutive ones. Got the point? Yeah. So now let's think कि how we will be solving this problem. मतलब कैसे भी सोचो, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें 2 pointers ही लगाने हैं. और 2 pointers का मतलब ये नहीं है कि हमेशा हम स्टार्ट और एंड पे ही रखेंगे, वो तो बस एक तरीका है. मतलब सॉर्टेड एरे था इसलिए हमने ऐसा किया, ज़रूरी नहीं है. मतलब 2 pointers का मतलब ये है कि बस यू विल बी हैविंग 2 pointers और तुम कुछ कुछ मैनिपुलेशंस कर रहे हो. इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम हमेशा ऐसे ही प्रॉब्लम को स्टार्ट करोगे, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम. आई टोल्ड यू राइट. हमने ऐसे क्यों स्टार्ट किया था? बिकॉज वी वॉन्ट अ वे टू इंक्रीमेंट सम एज वेल, क्योंकि इंक्रीमेंट Yeah. ऐसे करेंगे और डिक्रीमेंट ऐसे करेंगे. दैट्स वाई वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, है ना. बट ऐसा Yeah. ज़रूरी नहीं है कि हर बार ट्रू हो. Okay. तो फॉर दिस प्रॉब्लम इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम वैसे ही करेंगे. हमें तो लाइक वी वांट टू फाइंड द मैक्सिमम कॉन्सिक्यूटिव वंस हियर, दैट्स इट. So please think for 2 minutes about this problem. Okay. Yes, any ideas? So I thought first we would obviously use a for loop to go through it, and then um so whenever we find a one in the array, Mm-hmm. so we would obviously update the counter, and then what we would output is like, so it would be the answer. So the answer is like the maximum amount of the count. So we would just do like the function, like I know there's a function in C++, I think, for max. So we would use that and then just put like the counter inside of that, and then we would just return your answer, right? So one approach is, so basically let's try out your approach. I didn't get your approach, but let's see. मतलब let's try run on your approach. ठीक है. Tell me मतलब what will you do on this input? You started from here. So Okay. so first we would see if there are any ones, and if there are ones that are found, Mm-hmm. we need to increment the counter, and then Okay, so like your just counter is at 0 right now. मतलब at before starting the process. Now you'll increment your huh counter. Okay. So your counter become 1 after seeing this one. Okay. Then I should move forward. yeah. Okay. Now what will you do? Now you found the ones, you incremented one more time, Okay. Then I got a 0. What should I and do now? then you keep moving forward because it's not a one. Okay. Then You have a one, so oh wait. since this is 0, does it mean कि there is Oh, a break? Like this is a break of your
consecutive ones group. Yeah. So should we do something with this counter when we encounter a 0? We should like Hmm. we shouldn't increment it anymore because we would need to increment a new counter for the next set of Correct, rounds. correct. So what we can do? We should reset it now, है ना? Reset Yeah, let's मतलब reset the counter. point is we should just apply like we should just assign it to 0, and every time we should take the max of all these counters, isn't it? Yes, so just do max of that. Yeah. Correct. This is also a way. This is also a good way. Basically, देखो जब भी तुम्हारे पास बाइनरी एरे या बाइनरी स्ट्रिंग होते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड थिंक अबाउट इट इन दिस वे कि यू आर एक्चुअली हैविंग मतलब if I look very closely into this array, it will be something like this. You will be having some group of ones, then some group of zeros, then some group of ones, then some group of zeros, right? Take any binary array. Let's take this binary array. This is the group of one, and this is group of zeros, then this is group of one, right? Obviously, matlab, there will be 0 or more, like they will be more than or equal to 0, more than or equal to 0. मतलब first one है ना, समझ आ रहा है ना बात? तो ऐसे हम लोग मतलब सोच सकते हैं. Now what you told me is कि ठीक है, let's start from this. मतलब what we will be doing is let's create a counter. Now since I am at this one, so I'll increment it. So my count will become 1, then 2, 3, 4, 5, 6, 7. मतलब जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना तक मेरा काउंटर जाएगा. उसके बाद when I reach to 0, I'll just assign this counter to 0. And every time at every iteration, मतलब while I'm here or maybe I'm here or maybe I'm here or maybe I'm here, every time I will take the maximum of the counter value. मतलब अभी maximum value क्या चल रहा है, right? And that maximum value will be nothing but our answer, right? So basically जब हम ऐसे करेंगे तो अगर let's talk about any array. For example 1 2 3 4 5 ये ग्रुप है. उसके बाद कुछ जीरोस हैं. लेट्स से एक ही जीरो आता है, एक ही वन आता है, फिर कुछ जीरोस आते हैं, फिर कुछ वंस आते हैं, फिर कुछ जीरोस आते हैं. तो ऑब्वियसली दिस इज ग्रुप ऑफ 0, देन ग्रुप ऑफ 1, देन ग्रुप ऑफ 0, देन ग्रुप ऑफ 1, देन ग्रुप ऑफ 0, राइट? नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो लेट्स सी द काउंटर्स. ठीक है, काउंटर मतलब काउंटर का वैल्यू क्या होगा हर इटरेशन पे. तो राइट नाउ काउंटर 0 है. बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस काउंटर वाज 0. ठीक है. नाउ आफ्टर having this one, I'll increment my counter, then 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 0 आया तो मैं 0 पर रख दूंगा. What does it actually means? कि this is the max that we got, so this is the actually the size of this group, right? Yeah. That's what we want. We want the maximum size group of all ones. So every time, like here, every time at each iteration I will take the maximum of all these values. ठीक है, तो मेरा जो आंसर है ना वो maximum of all the counters होगा. बेसिकली यहाँ पे आंसर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 हो गया. अभी भी 5 ही चल रहा है भाई, बिकॉज आई एम टेकिंग मैक्सिमम एवरी टाइम. तो आंसर जो है वो एक्चुअली मैक्स ऑफ ऑल काउंट्स सो फार है. ठीक है. नाउ आई गॉट द 0, तो मैंने 0 लिख दिया. फिर 1 आया तो एक्चुअली मैं काउंटर बढ़ा के 1 कर दूंगा, राइट? फिर 0 आया तो मैंने फिर से 0 कर दिया. फिर 0 आया, 0 कर दिया. फिर 1 1 1 आया तो 3 बार मेरा काउंटर बढ़ जाएगा, 1 2 3. इट एक्चुअली मीन्स कि ये जो 3 है वो एक्चुअली इज टेलिंग मी द साइज टिल नाउ ऑफ योर साइज इज 3. एंड एवरी टाइम आई नीड टू टेक मैक्सिमम. तो मैक्सिमम तो वही रहेगा यार, मैक्सिमम तो हमेशा बड़ी वैल्यू ही रहती है. 5 5 5 चलता रहेगा. तो आंसर एट लास्ट विल बी 5. And the process you told me is not 2 pointers. This is also a way to solve this problem, and this is just using 1 pointer, right? You are just iterating and doing some manipulation. अब इस ये भी करेक्ट, ये भी सही तरीका है. तो let's quickly implement it. On Leetcode, basically how you implement, basically in Leetcode you just need to submit this function. ठीक है, you don't need to write that hash include और वो सब चीज़ें नहीं लिखनी होती हैं. In Leetcode you just need to submit this function, that's it. ठीक है, you don't need to take inputs, you don't need to take anything. So let's see मतलब how we will be writing this code. So basically writing this code is very simple. We first take the nums.size, which is n, because while writing the loop it will be easy to just write I less than n. Okay? Then we will be having an answer initialized with 0. We will be having a count initialized with 0. Now we just need to iterate over this array, right? Correct. If I got a 1, what I should do? I should increment my counter. Increment the counters. And if I got a 0, in that case I should just assign counter to 0. Just set it back And to 0. at every time I should take the max of counter, right? Yeah. And I should return this. That's it. Correct. I think this should work. So let's submit. That's how you submit on Leetcode. Yeah, it got accepted, right? Success aa gaya. Yeah. Got accepted. Now what is the 2 pointers method as well for this question? So this is actually a very good approach that you told me. This is also good.
अभी 2 पॉइंटर्स मेथड क्या हो सकता था देखो, I told you ना कि we will be having some group of ones, then we will be having some zeros, then we will be having some ones and that's it, मतलब ऐसे 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 रहेगा बाइनरी है। 2 पॉइंटर्स अप्रोच Yeah. क्या बोल सकता था कि ठीक है, since you got a 1 just stand here, ठीक है, since you got a 1, Yeah. now your second pointer should explore the size, so basically your second pointer will start from here, since it is 1 incremented, since it is 1 incremented, now since you got a 0 just stop here and just count the size. This is what a second 2 pointers approach is. Ki your first pointer will actually lie on the starting of your group. ये start group है ना, मतलब start है इस group का, this is the starting position. Yeah, correct. Now when you are starting at this position you will allow a second pointer and this second pointer will explore the size of this group. चलो ठीक है, देखते हैं what is the size of this group. So you will keep incrementing this pointer until it hits 0, right, until it Yeah. gets to 0. And since it gets to 0, or maybe what you can do कि चलो for every time we will, like अगर let's say कि ये 0th index है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, every time I will be incrementing this pointer and I will be counting the size. तो size क्या होगा, अगर एक pointer यहाँ पे है, दूसरा pointer यहाँ पे है, what will be the size if I want, मतलब let's say this is ith pointer, this is jth pointer, तो size क्या होगा इस group का, j minus I plus 1. why j minus I plus 1? Because let's say अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, and let's say my first pointer which is ith pointer is standing here, मान लो jth pointer यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो इस ग्रुप का मैं साइज पूछ रहा हूँ तुम लोग से, तो ये क्या साइज होगा, 3 minus 0 which is 3 plus 1, Yeah. ये साइज 4 है अभी, देखो ध्यान से, Yeah. basically you can also do that कि when you got a 1 just stop here and explore all the मतलब all its group. Once you got at the end of this group then you should start your I from here, मतलब you should not go till मतलब 1 by 1 सबके लिए नहीं जाना है. Are you getting my point? मतलब देखो क्या करना है Yeah. बेसिकली, जब देखो ये प्रोसेस कैसे चलेगा मैं वो बता देता हूँ, ठीक है, 2 पॉइंटर्स वाला. वंस यू स्टार्टेड फ्रॉम हियर, तुम्हारा ith वाला मतलब पॉइंटर यहाँ खड़ा है, अब jth वाला जो है वो एक्सप्लोर करेगा पूरा, एक एक करके एक एक करके एक एक करके यहाँ पे आके खड़ा हो गया j वाला, तो तुम बोलोगे कि यार दिस इज द साइज, ठीक है, तुम किसी तरह ये काउंट कर लोगे. नाउ यू विल सेंड योर आई टू दिस, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि ये ग्रुप का काम तो हो गया है, तो वाई वेस्ट आवर टाइम बाय लुकिंग एट दिस अगेन, मतलब यहाँ पे आई को थोड़ी खड़ा करेंगे. यू विल से कि ओके आई यू शुड नाउ कम हियर, आई यहाँ पे आ जाएगा, सिंस इट इज 0 आई मूव फॉरवर्ड, आई मूव फॉरवर्ड, सिंस इट इज 1 आई यहाँ पे आ गया, अब तुम्हें अगेन द सेम थिंग कि तुम जे वाले को आगे आगे बढ़ाते जाओगे, समझ गए. And that's how you can use 2 pointers as well, but you already told me a very good approach which is using 1 pointer only, ठीक है, तो वो अप्रोच तो काफ़ी सही है, but we can also use this using मतलब we can also solve this problem using 2 pointers as well, Yeah. ठीक है. Okay, so I guess you got the idea somewhat कि 2 pointers वगैरह लगाते कैसे हैं, right? Yeah. Okay, तो अब मैं मतलब प्रॉब्लम्स तो दूंगा ही तुम्हें प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो जितना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आइडिया और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है. Yeah.